Good morning. So today actually I have discussed about the Fourier integral. Just we'll discuss about the Fourier integral. Fourier integral. We have just discussed this function. What is the Fourier integral? How to solve this problem? So that is one equation. एक function हमको given that given है क्या होगा? What is given? Given is a function. F of x is given. A function हमको given होगा, and we need to evaluate the Fourier integral. So what is the actual Fourier integral? And just we define the Fourier integral like this. F of x can be expressed in this integral form. F of x can be expressed in this integral form, that is 0 to infinity a omega cos omega x plus b omega sin omega x d omega. This one is actually our Fourier integral. ध्यान से देखिए, यहाँ पे just nothing but is there only to evaluate the a omega value and b omega value. Then after that you can substitute in this equation, and that is only the Fourier integral actually. So only to see how to evaluate the Fourier integral, just you evaluate a omega value here, a omega, and that is a omega is how to evaluate here. Now a omega is equal to 1 by pi integration minus infinity to infinity f of x cos omega x dx. F of x cos omega x dx, and b omega, that is also same thing, 1 by pi minus infinity to infinity f of x sin omega x dx. So this formula is applied for the Fourier integral formula. Just you remember this one, how to apply and how to solve this question. Just nothing but this one only to evaluate the integration value. Only we can evaluate a, this function is integral value. Only we can evaluate this value, that is the integral value. Just we can see one example. Find the Fourier integral of the following representation here given. F of x, just mention here 1 and 0. Mod of x if mod of x less than 1, and this value if mod of x greater than 1. Find Fourier integral. Mod of x means this is the range value. Mod of x 1 infinity minus 1 infinity, that is value 0. Mod of x greater than 1, which represent the 1 infinity, that value 0, and minus 1 to infinity, that value 0. But only value mod of x is minus 1 to 1 lies in this interval. So in the case of Fourier integral, we need to evaluate the a omega value, and that is 1 by pi f of x cos omega x, f of x cos omega x, minus infinity to infinity is there, f of x cos omega x is there. Just we see here 1 by pi
f of x value here given 1. But condition in f of x is equal to 1, then the integral limiting value is minus 1 to 1. Because here mod of x is less than 1 is given. So this range value is minus 1 to 1. And that is cos omega x dx. And other value has already 0 mentioned here. So we see here 1 by pi cos omega x integration, that is sin omega x by omega. तो करेंगे -1 to 1. तो 1 by pi आ जाएगा बाहर में. तो sin omega by omega minus plus sin omega by omega. Just we can substitute in the place of x is 1 and minus 1. The 1 by pi, that is 2 sin omega by omega is there. So this value becomes 2 omega by pi, 2 sin omega by pi omega. That is a omega value we can evaluate it here. Again इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं b omega how to evaluate here. b omega हम evaluate करेंगे. So how to evaluate the b omega? That is also same thing, 1 by pi integration of -1 to 1 and sin omega x dx. So sin omega integration, that is cos 1 by pi integration is minus of cos omega x by omega, limiting value -1 to 1. What is its value? Now just when you put x is equal to 1, then this value 1 by pi minus cos omega divided by omega, and this minus 1 plus cos omega by omega. So this value 0. So b omega is 0, a omega is value evaluated for the Fourier integral. What is your requirement? Now your requirement is a omega and b omega. So Fourier integral, our requirement, our function is f of x, and इस function का Fourier integral होगा 0 से infinity a omega cos omega x plus b omega sin omega x d omega. So just we have to substitute the value of a omega and value of b omega here. So 1 0 to infinity, and a omega value has already evaluated here. That is 2 sin omega by omega. 2 sin omega by omega. This value आ जाएगा 2 sin omega by omega into cos omega x. ये तो 0 हो गया into d omega. So this is our Fourier integral. This value जो हो गया, this is our Fourier integral of our given function f of x. हमको जो f of x हमको given दिया गया था उसी का ये Fourier integral होगा. So this is your answer actually. Fourier integral का ही आंसर होगा. So just one question we need to see here. एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे.
जो फोरियर सीरीज का इंटीग्रल का हम बोले थे यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स इज फोरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला हम यहाँ पे डालना चाहते थे, क्या था उसका, जीरो से इन्फिनिटी ए ओमेगा cos ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा sin ओमेगा एक्स एंड डी ओमेगा। तो इसको हम टू इंटीग्रल में फॉर्मेट कन्वर्ट, फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फॉरियर साइन इंटीग्रल, उसको ये टर्म रहेगा तो फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल हो जाएगा, फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल। ये सेपरेटली करेंगे तो फॉरियर साइन इंटीग्रल, फॉरियर साइन इंटीग्रल होगा। जस्ट इसको रिमेम्बर करेंगे तो फॉरियर साइन कोसाइन इंटीग्रल एंड फॉरियर साइन इंटीग्रल ये भी कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल हम लिख सकते हैं कि हाफ रेंज एक्सपेंशन आ जाएगा। फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल हम ऐसे कर सकते हैं, फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो एफ एक्स वैल्यू आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी ए ओमेगा cos ओमेगा एक्स डी ओमेगा। इसको हम फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल करेंगे और हाफ रेंज एक्सपेंशन का फॉर्मेट में लाएंगे। तो यहाँ पे ए ओमेगा का वैल्यू जस्ट एवेलुएट करेंगे 2 बाई पाई आ जाएगा वहां पे, 0 से इंफिनिटी 2 बाई पाई 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स cos ओमेगा एक्स एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स cos ओमेगा एक्स डी एक्स, cos ओमेगा एक्स डी एक्स बन सकते हैं। तो ये फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल है। फॉरियर साइन इंटीग्रल भी हो सकता है, ये इवन फंक्शन के लिए फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल, ऑड फंक्शन के लिए कर सकते हैं फॉरियर साइन इंटीग्रल। ये कंसीडर करते हैं किसके ऊपर, मैंने ऑड फंक्शन के लिए। So this function also defined, that is fx is equal to 0 से infinity b omega sin ओमेगा x d ओमेगा। एंड जस्ट यहाँ पे b ओमेगा कैसे एवैल्यूएट करेंगे, b ओमेगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से infinity fx sin ओमेगा x dx। तो टू फार्मूला यूज द फॉरियर साइन इंटीग्रल एंड फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए हम यूज कर सकते हैं। तभी एक क्वेश्चन हम सपोज देंगे, फाइंड द फॉरियर इंटीग्रल्स f of x equal to the minus kx, f of x is equal to the power minus of kx, x greater than 0, k also greater than 0. First point, find Fourier cosine integral, Fourier cosine integral. So for Fourier cosine integral, what is your requirement? First you can see, जब cosine integral हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने चाहते हैं तो हम देखते हैं जो cosine integral के लिए मुझे क्या चाहिए ना, a ओमेगा चाहिए, because this is a cosine integral. तो a ओमेगा का जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है, जस्ट वी कैन अडॉप्ट दिस फॉर्मूला ओनली। तो वी नीड टू फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल, तो हम ये क्या करेंगे ना, ए ओमेगा जस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल। उसका फॉर्मूला है 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स cos ओमेगा एक्स डीएक्स, ये बोले थे। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड हियर, दिस इज द वैल्यू एफ ऑफ एक्स e to the minus kx, so you can substitute in place of f of x. So you can see here 2 by pi integration 0 से infinity e to the power minus kx into cos omega x.
तो इसी फंक्शन में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ना, बाई पार्ट्स का प्रोसेस में हम आ जाते हैं। ये वैल्यू को हम आई ले लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इसको आई में ले लेते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा, यू भी का फॉर्मूला डालेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट के हिसाब से जब जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये यू हो जाएगा एंड दिस इज भी हो जाएगा। तो यू फंक्शन को पहले डेरिवेटिव यहाँ पे कर देते हैं cos x। cos x जो है डेरिवेटिव नहीं करेंगे, उसका जगह में यहाँ पे डालेंगे cos ओमेगा x। क्या उसके बाद ना उसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा x, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा x। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जे दिस इज ए रिपीटिंग फंक्शन, ये रिपीटिंग फंक्शन हो गया, इसीलिए इसको ये वैल्यू अगेन द इंटीग्रल फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए हमको रिपीटिंग फंक्शन दैट वी कंसीडर आई। तब फॉर सेकेंड फंक्शन में क्या करेंगे ना, भी यहाँ पे होगा सेकेंड फंक्शन टू द माइनस के एक्स, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा टू द माइनस के एक्स बाई माइनस के, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे टू द पावर माइनस के एक्स बाई के स्क्वायर। बट इसका नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे बिकॉज ये जो ये डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बिकॉज ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ही रह गया है। तो ये वैल्यू जो होता है cos x ओमेगा x into the माइनस के x, जस्ट वी कैन रिप्रेजेंट द आई फॉर्मेट में आएगा। सो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू है यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन में क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। आई दिस वैल्यू यू कैन डिफाइन हियर, दिस इंटू एक प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/पाई बाहर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इंटू एक माइनस, यहाँ प्लस एक मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस cos ओमेगा x e to the power minus kx divided by k. ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी, दिस लाइन हैज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, सेकंड लाइन आल्सो इंटीग्रेटेड। सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा ना, दिस इंटू दिस, तो प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा x e to the power minus kx होल डिवाइडेड बाय k स्क्वायर। इतना तक हमारा इंटीग्रेशन हो गया, बाकी टर्म इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। दिस टर्म्स प्रोडक्ट का वैल्यू इंटीग्रेशन के बीच में रहेगा, सो माइनस this into this the minus omega square k square you can take in outside, then जो remaining value है that is cos omega x e to the minus kx dx। ये देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2/पाई एंट्री कर देंगे तो यहाँ पे 2/पाई भी आ सकता है, 2/पाई इसके लिए आ गया, फिर इसके लिए भी 2/पाई आ जाएगा। तो ये नेमिंग दिस इज द आई यू हैव मेंशन ऑलरेडी, दिस टर्म हैज मेंशन इज आई। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है दिस वैल्यू आई इज इक्वल टू हैव नेमिंग दिस वन, तो ये वैल्यू फिर एक बार रिटर्न हो गया, तो इसका जगह में इसको जब इंटीग्रेशन किए हैं तो लास्ट में ये वैल्यू भी एक रिटर्न हुआ है, दैट इज आई हैव मेंशन हियर। सो दिस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे आई ये इज इक्वल टू 2/पाई, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितना है ना, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो व्हेन यू कैन इन्फिनिटी भी यहाँ पे डालेंगे x के जगह में e टू द माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e टू द माइनस इन्फिनिटी दैट वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, e टू द माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा। जब 0 डालेंगे तो साइन 0 0, ये cos 0 1 आ जाएगा -1/k। तो फर्स्ट वैल्यू 0 आ जाए, सेकंड वैल्यू -1/k आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू 0 -1/k आ जाता है। तो जब अभी 0 डालेंगे तो इतना वैल्यू आ गया, फिर ये वैल्यू आ गया, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर आई आ गया, ये लेफ्ट में ले सकते हैं,
we take on left side of this function. तो ये क्या हो जाएगा I plus of omega square k square I is equal to 2 pi k. I यहाँ पे कॉमन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा k square plus omega square divided by k square is equal to 2 by pi k. तो I वैल्यू यहाँ पे आ सकता है 2 by pi k into k square by k square plus omega square. एक k कैंसिल हो गया, that is 2 k divided by k square plus omega square. ये I है, मतलब किसका वैल्यू है ये I हम जिसको कंसीडर किए थे, that is a omega. This is a omega. This a omega को हम I कंसीडर किए थे. So a omega value you evaluated here. So Fourier integral that is equal to a omega, so we can mention this value. A omega is equal to कितना होगा 2k by k square plus omega square. तो हम यहाँ पे I मतलब a omega वैल्यू है, Fourier कोसाइन इंटीग्रल हम लिखेंगे. Fourier कोसाइन इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा, तो जस्ट फॉर्मूला में डाल दे सकते हैं यहाँ पे f of x is equal to 0 to infinity a omega cos omega x d omega. This is our Fourier cosine integral of the function f(x). एंड यहाँ पे जो f(x) है a omega वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या करेंगे ना, f(x) वैल्यू जो है यहाँ पे a omega का वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे 2k 0 से इंफिनिटी 2k by k square plus omega square into cos omega x d omega. So this is our Fourier integral. This solution is called as the Fourier cosine integral. ये को हम कहेंगे Fourier cosine integral. So there is nothing, only two you can express the Fourier cosine integral. Similar procedure we have adopted, so you can evaluate the Fourier sine integral also. तो Fourier sine integral में क्या है लिखेंगे, what is the Fourier sine integral? Already mentioned for आप Fourier sine integral क्या होगा. Fourier sine integral already mentioned. This is the Fourier sine integral. यहाँ पे Fourier sine integral में क्या ना, ओनली b ओमेगा एवोल्यूट करेंगे एंड उसके बाद इन डाल देंगे तो वो Fourier sine integral हो जाएगा. तो जस्ट अनदर एग्जांपल अब देखते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होगा. देखो f(x) है 1 0 less than x less than 1 and 0 x is greater than 1. तो ये Fourier कोसाइन इंटीग्रल हमको, Fourier साइन इंटीग्रल हमको नहीं, कोसाइन इंटीग्रल निकालना है कि Fourier साइन इंटीग्रल नहीं है. Fourier कोसाइन निकालेंगे तो जस्ट ओनली फॉर क्या, Fourier कोसाइन इंटीग्रल मुझे चाहिए, Fourier कोसाइन इंटीग्रल मुझे चाहिए. तो यहाँ पे कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा ना, f(x) इंटीग्रेशन 0 to infinity a omega cos omega x d omega. तो यहाँ पे जस्ट इक्वल a omega ओनली अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो a omega का जो फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था ना, 2/5 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. तो 0 से 1 होगा f(x) cos omega x dx प्लस
1 से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस ओमेगा एक्स। तो ये तो 1 है एफ एक्स, इसके लिए इसके जगह में 1 डालेंगे, इसके जगह में 0 डालेंगे, तो इसका कोई इंटीग्रेशन इधर 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो वैल्यू आएगा ना 2/पाई आ जाता है, तो ये कॉस ओमेगा एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा एक्स बाई ओमेगा, हम अभी डालते हैं 0 से 1, तो 1 डालेंगे तो साइन ओमेगा बाई ओमेगा 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा, 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाता है। दिस इज द वैल्यू ए ओमेगा वैल्यू, यू कैन इवैल्यूएट हियर। एंड ए ओमेगा का वैल्यू फोरियर इंटीग्रल में यहाँ पे डाल देंगे तो दैट इज फोरियर इंटीग्रल, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो एफ एक्स इज फोरियर कोसाइन इंटीग्रल 0 to infinity 2 sin ओमेगा बाई ओमेगा cos ओमेगा एक्स डी ओमेगा, ये फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, बिकॉज इंटीग्रल का फॉर्मेट में रहेगा तो दैट इज ओनली द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। जो भी इंटीग्रल का फॉर्मेट में रहेगा दैट इज द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, एंड टू इवैल्यूएट दिस इक्वेशन। Okay, so this is the Fourier cosine and sine integral and for integral also. Thank you.